लगेगा आपको। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ऐसे मत करो। Yeah, good morning everyone. Abhinav, Amisha, Ans, Ashad, Atir, Ila, Janvi, Sarthak, Sunita. Shivani has not joined yet. क्या अंश क्या मौका मिलेगा, कौन किस तरह का मौका चाहिए? बस और क्या, इंद्र नगर को गलियों में घूमेंगे। ओके, हाँ घूम लेना जरूर आतिर भाई, कभी मौका मिला तो। आई डोंट नो क्या मौका मिला तो हम बता देंगे। हाँ राइट सर वो अंश को मैंने बोला था ना क्या? अरे अंश भाई कभी हमें भी बाइक में घुमाओ। अच्छा, बस लड़कियों को घुमाते हैं, हम लड़कों को नहीं घुमाते। तो ही मैंने बोला था कि कभी हमें भी घुमाओ, तो कहता था हाँ आतिर भाई घुमाएंगे आपको। ठीक। चलिए, कल हमने क्या पढ़ा था? What we discussed yesterday, can we summarize that? कल हमने स्पीडली रिवॉल्यूशन कर दिया था, आपको दिखा दिया चाहिए डेमोक्रेसी में ये कारण है और सॉल्यूशन ये होगा। कैन यू एक्सप्लेन बाय द वर्ड? एनीवन? यस या नहीं? सर आपका झुंझुना है, आप ही बजाओ। Is that? आतिर क्या? What do you want to say? क्या सर? कल जो हमने बात की थी, क्या क्या बातें की थी, थोड़ा इसको समराइज करना है। सर कल की बातें छोड़ो, कल की बातें पुरानी, नए दौर से निकलेंगे हम लोग के नई काम। तुम आज पूरे मूड में हो? सैटरडे इसलिए नहीं सर, होता है ना स्टूडेंट लाइफ में, सैटरडे पार्टी होती है। नो, मैं तो सैटरडे पार्टी क्या करता था, इट्स सैटरडे आई यूज्ड टू सेलिब्रेट। उस समय म्यूजिक नहीं हुआ करते थे, रेडियो हुआ करते थे, यू नो। और रेडियो में सैटरडे को, आई डोंट नो अब देता है कि नहीं देता है, दैट टाइम वो सैटरडे को बहुत ही ऐसे म्यूजिक देते थे जैसे राइट, रॉक म्यूजिक जिसको बोलते हैं, और फिर हम पार्टी क्या करते थे। तो ऐसा भी तो नहीं है। नो इशू। कल हमने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन का पढ़ा था सर, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन के बारे में। हाँ, कल स्टेट एंड रिवॉल्यूशन के बारे में। हाँ, उसके बारे में लिखा था कि अपना एरिस्टोटल का जो पर्पस था स्टेट को लेके, टू कल्टीवेट मोरल एंड सिविक। व्हाट इज रिवॉल्यूशन? व्हाट इज रिवॉल्यूशन फॉर एरिस्टोटल? सर के थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन था, एरिस्टोटल वाज लाइक, उसमें हमने पढ़ा था कि ही वाज अ कंजर्वेटिव थिंकर, ही बिलीव्ड इन स्टेटस क्वो। पार्डन प्लीज, थोड़ा जोर से। लाइक वो स्टेटस क्वो में बिलीव करता था सर। हाँ जी। और यू कैन कंट्रीब्यूट टू आतिर, सब लोग मिलके बोल सकते हो इकट्ठा, नो प्रॉब्लम। अनम्यूट योरसेल्फ, मैं तो कितने बार बोला हूं आप लोगों को, यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड हैव डिस्कशन। यस सार्थक? सर एरिस्टोटल वाज अ कंजर्वेटिव थिंकर। थोड़ा जोर से सार्थक। सुबह नाश्ता किया है कि नहीं किया अभी तक? हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। Sir, Aristotle was a conservative thinker. Right. As he believed in a status quo, the current situation of state and political and social issues. Right. Very good. For him, revolution means change in like form of government, set of rules, right. Way of life, and business of government. Yeah. And sir, according to him, when there is a revolution, there is a political instability in the state. Okay. So what are the causes of revolution?
आप चुप हो जाइए, दूसरे बोलेंगे. Okay, what are the causes of revolution? Ila, if you want to speak, I'll have to knock your door. Yes, Janvi, go ahead. Welcome, Janvi. Yes. What are causes of revolution? Yes, so the causes for the revolution that Aristotle gave were basically, categorized into three. So first he said was due to rulers. Second he said was due to rule, and third was a combination of the two. So in the first, when it is because of the rulers, it is mostly because the rulers or the factions in the ruling party are having differences of opinion, or they are, they are like against. The few are against the whole government, or there are differences basically. So that is the first cause, when there are differences among rulers. And the second is when there are various other reasons for political instability, like there is desire for equality, wealth, or participation that is being demanded by the by the subjects. So, and the third would be a combination of the first and second. So when both of these elements combine, there is another revolution in the state which causes political instability. And then we discussed the different forms of constitutions in which there are different causes of revolution and different solutions for each, which we are to discuss today as well. So we did democracy, in which the causes of revolution are when there is unlimited freedom given or because of demagogues. So the solution in this case would be to extend the right to vote even to the poor or to the underprivileged, and to increase the participation. And then next is oligarchy. So in this, the main cause would be oppression or the narrow policies of the rulers and faction. So here the solution would be to minimize the inequality, then the distributive justice, corrective justice, and then also to harmonize the relations among citizens and reduce the factionism. Then next have is aristocracy. So in this, basically it is because of the narrow circle of the rulers, then dishonor of the wise men, and they are mostly deviated from justice, and the rule feel that they are too worthy. So the solution would be same as oligarchy, to minimize the inequality and corrective justice and distributive justice. So next is monarchy, in which basically the causes of revolution are usually due to the family feuds, and the solution here is to inculcate loyalty, obedience, and reason amongst them. So next is tyranny. Tyranny, the main reason is obviously increasing tyranny or the fear and contempt of the rule, and the solution is to divide and rule, to create class hatred, or fear to be religious. And then last is polity, which demands like the main causes is are demand for more inclusion, inequality, corruption, and influx of foreigners. So the solution would be to inculcate civic and moral virtue, and to increase the administrative capacity, to reduce inequality and address corruption, and of course propagate education for all. So why education should be the solution? Education is one of the means to propagate propaganda, to spread propaganda, isn't it, Janvi? So education, you give education in such a way that people will get socialized into your your governance, your law. Make them better citizens and aware, so that they can participate. Right. Very good. बहुत बढ़िया. Excellent, actually. It is excellent. Okay, so आतिर ने कल बोला कि सर टायरनी में मैंने देखा तो मुझे एक इंसान याद आ रहा था. राइट, कल मैं जल्दी में था. यस आतिर, जब तुमने टायरनी का कॉजेस एंड सॉल्यूशन देखा. यस सर, पता ही है सर, एक ही इंसान है, घर घर में रहता है. घर में रहता है. राइट, so वो अभी यही कर रहा है. राइट सर, एक मैगजीन है टाइम्स करके. टाइम्स नहीं सर, टाइम्स सही बोल रहे हो. डिवाइडर्स इन रोल. हाँ सर, डिवाइडर इन चीफ. राइट, उसी का मैं देख रहा था. यस वो किसने बनाया पता है? उसकी सिटीजनशिप खत्म कर दी. यू नो दैट मैन.
जी सर, जी जॉर्नलिस्ट, सर, कौन जी। है वो? सर मैं नाम भूल गया, पर इतना पता है उनके फादर कोई एनआरआई थे और मम्मी इंडियन थी, और वो लोग इटली या जर्मनी में कहीं रहते सर, यूरोपियन कंट्रीज में अरे, कहीं। फादर पाकिस्तान का, मम्मी पंजाबी, हाँ हिंदुस्तान हाँ की, जी राइट। जी। और मम्मी का नाम बता देता हूँ, तबलिन सिंह। इंडियन एक्सप्रेस में संडे को, हर संडे को लिखती है, एक कॉलम उनका होता है तबलिन का, राइट। एंड जब उसका सिटीजनशिप खत्म कर दिया गया था, तो तबलिन उससे पहले भक्त, you know, one word has coined, it is used in today's world, it's a bhakt. Are you aware of this word? Right? So she was bhakt. She used to write, she was to justify anything of the Modi government. But when she, actually bear the burden of this government, then kya hua? She totally turned, my God, and she started criticizing government. You read tomorrow, there will be one column in Indian Express tomorrow, Tavlin Singh, and you say what she writes. Fine. Any confusion in theory of revolution? I'll start it here. कोई है confusion? अंश को नहीं है हमेशा. Any confusion? Janvi has beautifully explained. No. Fine. Good. So ऐसे ही होना चाहिए explanation. मेन पॉइंट लिखा दिया मैंने, आपको एक्सप्लेन करना है कि सर ऐसे होता है, ऐसा है, तो ऐसा होना चाहिए प्लेटो के हिसाब से. और ये चीज जो कुछ फैक्ट है आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ समझने की बात है, और कुछ याद कैसे होगा, 10 बार पढ़ना पड़ेगा, और कुछ नहीं है. ओके, 10-12 बार 15 बार पढ़ो, याद हो जाएगा. ओके, सो शुड आई मूव अहेड? Okay. So, in Greek city-state, there was a 4 school of thought. One was Plato's Academy, you all know. Third was Aristotle Lyceum, and third was Epicureans. लिख लीजिए इसको, Epicureans. हम जब जर्मी बेंथम पढ़ेंगे तब थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस करूंगा एपिक्यूरियंस के बारे में. एपिक्यूरियंस कहता था कि जिंदगी में खूब मजे लो, और रखा क्या है, राइट? खूब जियो अच्छे से, राइट? प्लेजर एंड पेन, लाइफ में 2 ही चीज है, प्लेजर एंड पेन. लोग पेन को दूर करता है और प्लेजर को पाना चाहता है, राइट? उनकी ऐसी फिलॉसफी थी, उसको बोलते हैं हेडोनिज्म. और चौथा था स्टोइक. तो हमारी सिलेबस में नहीं है सिंस ये, तो हम इसको स्किप कर देंगे. बट एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट में देयर वाज अ 4 फिलॉसफी. वन वाज प्लाटोनिक फिलॉसफी, सेकंड वाज एरिस्टोटल फिलॉसफी. दिस वाज बेसिकली ब्रॉडर स्कूल, एंड प्लेटो में ही सोक्रेटिस आ जाता है, राइट? देन एपिक्यूरियंस, देन स्टोइक्स. क्लियर? इसको लिख लीजिएगा तो लिख लीजिए, नहीं लिखेगा तो कोई बात नहीं है, राइट? आप कहीं पे ये वर्ड देखिएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा ये है क्या? ये एथेनियन सिटी स्टेट में ही एक फिलॉसफी थी लाइफ को लेकर के. Now, should I move to ethics, right? क्वेश्चन है दिखाना आपको. ये पीपीटी है आपके पास? Do you have this PPT? Yes? Okay. चलिए, ethics. सर हाँ बोलिए. सर आप
कल ये सब मतलब के समझाने वाले थे ना हम लोग को, बोले क्या थे आज समझा? कॉसेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रिवोल्यूशन, फिर उसके तो बाद आप तो जो समझ गए, तो मुझे क्या समझाना है? सर उसमें से कुछ कुछ पॉइंट है जो हम लोग नहीं समझ पाए। पूछिए मुझसे, पूछिए, मोस्ट वेलकम। क्या नहीं समझा? सर अब क्या ये बताए सर, वो इनफ्लक्स जैसे कि एक पॉलिटी है, पॉलिटी के में कॉसेस है, इनफ्लक्स ऑफ फॉरेनर मतलब अगर फॉरेनर ज्यादा आ जाए तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है। अच्छा पर आज सर आज अच्छा सर ये सब लोग उसका पढ़ रहे हैं। मैं सर पता बार बार ना इसको ना ये मॉडर्न टाइम से पता नहीं कहाँ से रिलेट कर देता हूँ। हाँ हाँ सही है। अब यूएस में देखिए एक प्रॉब्लम है, बाहर से सारे सारे दुनिया से लोग जा रहे हैं, बट नाउ द यूएस पीपल आर रेसिस्टिंग। वो अब मेरे यूएस, को नहीं यूके, पता था। हाँ यूके, ये जो प्री एग्जिट था वो क्या था? इट वाज अ पेरोनिया, डर था, एक फियर था कि बाहर से इतने लोग आ जाएंगे, when the foreigners will come in so much amount, so much of volume, then we will be minority, and when we will be minority, if there is a democracy, they will have more say. There's a problem in northeast also, right? So in Manipur there are different communities like Kukis, like other community, but it is dominated by Kuki, and they are against of entering other neighboring people from neighboring states, right? So it may cause political instability. हाँ, मॉडर्न टाइम से बिल्कुल रिलेट कीजिए, मोस्ट वेलकम। पर सर वो अब एरिस्टोक्रेसी का फर्स्ट कॉसेस में था वो नैरो सर्कल करके, नैरो सर्कल मतलब है आगे बताता हूँ। अच्छा, एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कुछ ही लोग रूल करते हैं, फ्यू chosen wise person, chosen wise और noble person, prudent person, यही होता है few chosen prudent कहिए या wise person। जी सर। अब फ्यू में कितना नाम तो नहीं है ना, फ्यू में 2 भी फ्यू है और 5 भी फ्यू है और 25 भी फ्यू ही है। इफ यू कंपेयर विद द उनका जो पॉपुलेशन था, अब कितना मैंने बोला था, 1680, यस 1680s। सो अब ये फ्यू चूजन वाइज पर्सन में कितना होना चाहिए? अगर ये सर्कल नैरो होगा, मान लीजिए कि हम 5 लोग से ही शासन करेंगे और 25 और भी वाइज पर्सन है, दे मस्ट बी इंक्लूडेड, बट आप इंक्लूड नहीं कर रहे। You are keeping your circle very narrow and not including other wise person. They will feel dishonored, right? Okay sir. Right? So what they will feel, वो लगेगा कि यार मेरा तो अपमान हो रहा है, और वो क्या करेंगे, सरकार के अगेंस्ट में कहानी शुरू कर देंगे। ठीक है? ठीक है सर। डेविएटेड फ्रॉम जस्टिस, देखिए जस्टिस एक ऐसा चीज है अरिस्टोटल के हिसाब से कि वही गवर्न करना चाहिए। आपको बता दिया जस्टिस मतलब क्या है, लॉ, लॉ शुड गवर्न। अगर हम जस्टिस से डेविएट हो जाते हैं तो भी रिवॉल्यूशन आ सकता है। Am I making sense or not? Yes sir. सार्थक? Yes sir. Yes sir. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? Yes sir. और कुछ याद है? फैमिली फ्यूज सर। अरे फैमिली का झगड़ा, अब राजा में झगड़ा क्या होता है? आपने अभी जो रिसेंट में बताता हूँ, अभी जो रिसेंट मेरे दिमाग में जस्ट क्लिक किया, आपको पता है राजा बीरेंद्र सिंह ऑफ नेपाल, राइट? और उसके फैमिली ही ने उसके फैमिली को मार दिया, सबको। एक इंसान ने अपने घर के सारे इंसान को मार दिया।
डू यू रिमेम्बर? ईयर था 2001 और 2000 और 99, बट उसी टाइम पे था 20 ईयर्स अगो। देन उनके तीसरे फैमिली वाले आए, कौन? ज्ञानेंद्र, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। ही केम टू नेपाल एंड देन रिज्यूम ऑफिस। सो अगर कोई मोनार्क है और उसके, अरे महाभारत, अगर कोई मोनार्क है, राजा, महाभारत क्या था? फैमिली फ्यूड्स थी। ओके आतिक? यस। हो गया सर, अब हाँ, हो गया सब क्लियर सर। क्लियर हो गया, ठीक है। फैमिली फ्यूड मतलब झगड़ा। अरे दो भाइयों में झगड़ा होता तो अलग अलग हो जाते हैं, वही रिवॉल्यूशन है। हाँ, ठीक है, चलिए। अमीषा सर ने बाहुबली 2 भी फ्यूड का एग्जाम्पल है। हाँ, फैमिली फ्यूड था। बाहुबली 1, बाहुबली 2 जो भी देखा। अरे ये अंश का एग्जाम्पल है सर, अंश मुझे बताया सर। नहीं, सही है, वो सही बोला उसने। एग्जाम्पल तो कुछ भी आप ले सकते हैं ना, ये तो थियरी है, राइट? प्रैक्टिस कुछ भी ले सकते हैं। अब फैमिली फ्यूड मुगल में भी था। हर मोनार्क में फैमिली फ्यूड होता है, उसको बैलेंस करना होता है। जब फैमिली फ्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऑफ कोर्स डिक्लाइन होगा, रिवॉल्यूशन होगा, चेंजेस होंगे। इफ यू सी आफ्टर औरंगजेब, और औरंगजेब के टाइम पे ही फैमिली फ्यूड बहुत ज्यादा हो गया, और उसके बाद तो ये फ्यूड और बढ़ता गया, आप देखते रहे। ठीक है, अमीषा बोली सर फिर से रिपीट कर दीजिए। अमीषा, फिर से रिपीट करने की जरूरत है? आतिफ बोल रहा है यस सर, फिर से रिपीट करूं? अरे नहीं, बोरिंग हो जाएगा। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो सर वो पहले का यस सर है, वो जब आपने पूछा था कुछ, रिपीट वाला यस सर नहीं है। अच्छा, अमीषा को सुनाई नहीं दे रहा था तो शिवांश रिपीट। सॉरी, होल्ड इट। सुनीता, Sunita, am I audible? Good morning, sir. Good morning. Can you repeat the entire theory of revolution in 5 minutes, okay? सर एक्चुअली जो आपने अभी बताया, मैं मतलब कनेक्शन कट गया था बीच में, पर मुझे जो पता वो बता सकती हूँ। हाँ, जो पता है वही बताइए। ओके, स्टार्टिंग से सर, वैसे ही यहीं से स्टार्टिंग से। So sir, yes, according to Aristotle, revolution means change in form of government, and change in rules and regulations, and change in the means business of the government. Then Aristotle told that there are causes of revolution. He told that generally there are 3 causes. First are due to rulers. If rulers have different opinion and they means वे एक दूसरे के खिलाफ भड़क जाए तो दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है. So rulers, and second reason is because of the rule. Means जो लोग वहाँ पर जिस पे शासन जो रूल मीन्स वहाँ की पॉपुलेशन है, कॉमन सिटीजन्स. यस, उनको जैसे कुछ लग रहा है कि उनके जस्टिस नहीं मिल रहा, इनइक्वालिटी है, सो वो भी कर सकते हैं. राइट, अन्ना हजारे. क्या सर? करप्शन है. यस, सो उनको फील होता है ऐसा. और दोनों मिक्सचर भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी कॉर्पोरेशन हो और यहाँ से मीन्स पीपल भी ऐसे. और डेमोक्रेसी के क्या कारण है? जब डेमोक्रेसी है उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के? सर एक्चुअली मैंने कल पढ़ा नहीं, मैंने सोचा आप बताओगे इसलिए मैं कर ही नहीं आई इनको. अच्छा, बताता हूँ. डेमोक्रेसी में रिवॉल्यूशन क्यों आएगा? अरिस्टोटल का मानना है कि जो अनलिमिटेड फ्रीडम अच्छी चीज नहीं है. जब फ्रीडम अनलिमिटेड हो जाए तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है.
right? अभी अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, there are reasonable restrictions. There is no unlimited freedom. If you look at the Athenian city-state, Socrates was a critique of democracy. Why? Because he said it is an unbridled freedom that people are exercising. And if you have unlimited freedom, अगर आपके पास बहुत असीमित स्वतंत्रता है, तो आप क्या करेंगे? मैक्सिमम जो फ्रीडम का मिसयूज होता है rather than यूज होता है, राइट? आपके पास नेगेटिव फ्रीडम और पॉजिटिव फ्रीडम का आइडिया पता है? मैंने पॉलिटी की क्लास में बताई थी, जब आपको मैं लिबर्टी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा. सो राइट, अनलिमिटेड फ्रीडम मतलब कि मेरी गाय और मैं मतलब चाकू से ही नाथ दो उसको, आपको क्या? दूसरा बोलेगा नहीं यार ऐसे मत करो. बोले मेरी गाय है. अच्छा, कालिदास का कहानी पता है? वो कैसे काट रहा था पेड़? उसके पास फ्रीडम थी, वो जिस टहनी पे बैठा हुआ था उसी टहनी को काट रहा था. What does it mean? Unlimited freedom is not good. And he said it may cause for revolution. Then demagogue. What is demagogue? Demagogue is a leader who instigates wars, right? If you come to in Indian politics, I'll tell you Indira Gandhi. Garibi hatao, right? So she appealed to masses कि लोग बोल रहे हैं इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, right? So that statement appealed to masses कि ओके ठीक है, सही बात है कि सब बोल रहे हैं इंदिरा हटाओ अपोजिशन वाले, और मैं कहती हूं गरीबी हटाओ. तो this was a populism, right? If you look Narendra Modi, he's also, will come into that category. सब कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ. मैं कहता हूं जनधन लाओ, 15 लाख अकाउंट में डालो, ये करो, इतनी नौकरियां डालो, इतने रोड बनाओ, इतना. He was talking about, are you aware of that? अच्छे दिन लाओ, सबका साथ सबका विकास करो, right? So he was appealing to the poor, the masses, right? Black money को वापस लाओ, right? So if that demagogue will come, that may change the entire role, right? The business of the government, set of the rules, everything it can change. And if you see Indira Gandhi, what was the consequences? Emergency. Right? If you see Narendra Modi, if you put him in it, but he is described as an authoritarian ruler by the British, right? If you look at Turkey, if you look at Russia, if you look at this country, have one leader, very strong leader, right? And they continues in office, despite of the fact the ruler is not delivering what they promised, despite of the fact. Narendra Modi, वो developmental work करे ना करे, but he can, 2003 से ऑफिस में भाई साहब, 2002 या yes 2003 से. He was chief minister, now prime minister, and the next election is going to be held in 2024. He will be. But if you see the changes in the way of life, lots of people, it's changed. It's changed. Look at the TV channels. The totally attitude of journalists are totally changed. Don't you feel so? Anjana Om Modi के बारे में किसी को अगर पता हो, right? They totally changed. Even the attitude of people have also changed. So many things came into being, like everyday communalism, right?
खाने पे बात हो रही है, क्या खा रहा है कोई, शादी पे बात हो रही है, कौन शादी किससे कौन कर रहा है। अब कल मथुरा में एक दुकान था जिसके नाम, वो मुस्लिम का दुकान था, बट उसने लिखा था श्रीनाथ भटूरे वाले या डोसा वाले। पीपल ने बवाल कर दिया लोगों ने वहां पर, राइट। सो थिंग्स हैव ऑलरेडी सर हाँ 2014 से पहले इतना मतलब कि रिलीजियंस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था। you know, I'm telling you the fact that, you know, I have friendship, lots of friends I have, but we used to meet several times. We never used to talk politics, but since 2014, you know, we have started politics. I don't know how, and no politics. I'm telling you, we have started talking about Hindu-Muslim, right? Few friends are very aggressive. ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, and मैं say कि यार we did not discuss ever, never ever like this, but that happens. That totally changed. And even, you know, अब थोड़ा कम कर दिया बातचीत करना, because attitude बदल गया तो I can't do anything, right? If you can't apply your personality, your region, your cross examination, right? So of course things have changed already. So if there is a demagogue, then revolution may take place, right? कितने तो स्कॉलर कहते हैं कि it's undeclared emergency. If you write something on Facebook or Twitter, you may be charged with sedition. Anyway, I should not talk about the current government, but demagogue is एक बड़ा रीजन है कि वो, अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप फ्रेंचाइज बढ़ा दो, पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ा दो, राइट? ये सॉल्यूशन उन्होंने बताया, ठीक है? अगर फ्रीडम लिमिट कर सकते हो तो वो भी कर दो, राइट? बट ही सेड इट्स अ बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ कम टू ओलिगार्की. अब ओलिगार्की में कौन रूल करता है? फ्यू चूजन वेल्दी पर्सन. wealthy person. अब ये few chosen wealthy person है, and if he work or if that oligarchy अगर अपने self interest के लिए काम करता है तो लोग of course शोषण करेगा, ऑपरेशन करेगा. अगर नैरो पॉलिसी के लिए काम करता है, इसके अंदर में अगर फैक्शन है तो रिवॉल्यूशन होगा. अब क्या सॉल्यूशन है कि इनइक्वालिटी, जो गैर बराबरी है उसको मिनिमाइज करे. गैर बराबरी तो रहेगी लेकिन मिनिमाइज करे. और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस जो है, जो दो जस्टिस है आपको पता है, करेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, लोगों में बांटना, सोशल एंड इकोनॉमिक गुड्स, और करेक्टिव जस्टिस अगर किसी के साथ गड़बड़ हो जाए तो उसको ठीक कर देना, राइट? ये सब सॉल्यूशन है जिसको जो ओलिगार्की है वो कर सकता है. उसके बाद जो सिटीजन है उनके बीच में सौहार्दता बढ़ाना, यू नो, हार्मोनाइजेशन करना, हार्मोनाइज करना रिलेशंस को, राइट? दैट इज ओलिगार्की. ये एरिस्टोक्रेसी अभी डिफाइन किया है. मोनार्की, मोनार्की में कारण होता है, ये भी डिफाइन किया है कि फैमिली अगर झगड़ा है तो रिवॉल्यूशन होगा, यानी सरकार बदल जाएगी, ठीक है? सॉल्यूशन क्या है? कल्टिवेट लॉयल्टी एंड ओबीडियंस एंड कल्टिवेट रीजन, राइट? ये सॉल्यूशन है. आइए टायरेनी. टायरेनी में कॉजेज है. टायरेनी मतलब एक्सेसिव ऑपरेशन. अगर कोई किंग है और वो टायरेनिकल है, इफ ही डज एक्सेसिव ऑपरेशन, देन
there may be revolution, right? And other causes is कि अगर लोग डर जाए उस राजा से, ये आज नहीं तो कल गला तो काटेगा, राइट? हम लोग ये तो खाएगा हमें, तो फिर लोग रिवॉल्यूशन करते हैं अगर लोगों में डर होता है तो। अब टायरनी को सॉल्यूशन क्या दिया है कि चलो उनमें झगड़ा लगा दो, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम से लड़ाई करवा दो, कास्ट के अंदर लड़ाई करवा दो, ठीक है, क्लास में रिच एंड पुअर में हैट ये करवा दो, झगड़ा करवा दो, स्पाई रखो हर जगह, ठीक है, स्पाई सिस्टम, एंड देन धार्मिक बन जाओ, we appear to be religious, yes आते, so धार्मिक बन जाओ कि मैं बहुत ही अच्छा और नेक इंसान हूँ, कहीं पे जाके पूजा पाठ करके आ जाओ, कुछ मंदिर चले जाओ, ठीक है, तिलक तिलक लगा लो, पब्लिक फिगर में आ जाओ कि he is religious, he cannot do wrong thing, right? Amisha? Okay. Now polity. Polity, he said, it is the best form of role. Pegasus, sir. Pegasus. Okay. No problem. There's a, beyond Pegasus, there are lots of spy. People are clearly being watched. If you write anything, your will or your opinion at either Twitter or you'll be abused heavily. Will be abused heavily. Facebook, कहीं भी. Anyway, polity में कारण क्या हो सकता है कि अगर what is polity? It is a mixture of democracy and oligarchy, right? So he said सब लोग इंक्लूजन नहीं होना चाहिए पॉलिटी में, ठीक है, वेल्थ और मेरिट ये बहुत जरूरी है, दोनों चीज। अगर डिमांड आ जाए लोगों का, हमें भी वोट, राइट टू वोट दो, हमें भी राइट टू वोट दो, तो आपको ये एक रिवॉल्यूशन का कारण बनेगा। अगर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा आ जाए, गैर बराबरी बहुत ज्यादा आ जाए, तो ये भी एक कारण बनेगा। करप्शन, अन्ना हजारे, corruption can be one of the reason of revolution. Then अगर proportional equality, आप जानते हैं proportional equality, अगर उसमें कुछ डिसबैलेंस आ जाए, राइट, अगर उसमें कुछ डिसबैलेंस आ जाए तो भी ये कारण हो सकते हैं। और एक लास्ट है कि अगर बहुत ज्यादा फॉरेनर आ जाए, है ना, तो ये भी रिवॉल्यूशन का कारण होगा। Have you heard of Maharashtra Navnirvan Sena and Shiv Sena? How Shiv Sena came into being? Shiv Sena party in Maharashtra. Anyone? शिव सेना का जन्म कैसे हुआ? सर प्लीज रिपीट, मेरे को आवाज नहीं आई, थोड़ा प्लीज हो गया। अच्छा, रिपीट क्या पॉलिटी पे करूं या? नो सर, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि शिवसेना का जन्म कैसे हुआ था। ये शिवसेना पार्टी है, अभी रूल कर रही है महाराष्ट्र में, आप सबको पता होगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते इतना तो पता होगा। इसका जन्म कैसे हुआ? जानवी? सर बाला साहब ठाकरे। या बाला साहब ठाकरे तो लीडर है, बट हाउ? हाँ, यूपी से बहुत सारे लोग वहाँ पे वर्क करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, उससे पहले की कहानी है। मार्मिक, इला, व्हाट डज इट मीन मार्मिक? Unmute now. Why you are not unmuting? I don't know. Why you people are not unmuting? Either feeling shy or sir maybe the reason was कि
वहाँ पे जब बाला साहेब ठाकरे वाज अ कार्टूनिस्ट और उन्होंने Yeah, वहाँ पे exactly. ये चीज फील की कि जो महाराष्ट्र की जॉब्स है और जो राइट्स हैं वो महाराष्ट्रियन से ज्यादा बाहर के लोगों को मिल रहे हैं. वो कौन था बाहर के लोग? They are person of South Muslims. Exactly, South Indian. Exactly, very good, Sarthak. He led movement against South Indian. Excellent. He led movement in South Indian in 1966 and said कि अगर South Indian ही सारा जॉब खा जाएगा हमारा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, राइट? और ये पार्टी नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक एनजीओ तो नहीं बोलेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खोला था, राइट? 2 साल बाद इन्होंने काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा और नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन लड़ लिया और काफी सक्सेस मिला. तो इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेनर, आप देखो कि वहां पर सत्ता में बदलाव आ गया, शिवसेना पार्टी सरकार बना ली, डर हुआ. 90 में आकर के ये लोग साउथ इंडियन को छोड़ करके यूपी और बिहार के भैया पे लग गए, ये लोग हमारा सारा ये खा जाते हैं. उसके बाद 90 में एक और मौका मिला उनको, बाबरी मस्जिद, मुस्लिम के अगेंस्ट में. किसी ने बॉम्बे मूवी देखी है? yes Atir, such a sweet movie, such a sweet song, but such a nice movie. Janvi, you have not watched Ila? अरे क्या कर रहे हो, जीवन में कुछ मूवी देखना चाहिए लाइफ में. Ans, watch it. You must watch few movies. What about Mother India? Have you watched about what Mother India? अंश कुछ मूवी कलेक्शन रखिए अपने पास और देखिए, ये आपके थॉट्स को भी बदलते हैं, आपके पर्सपेक्टिव को भी बदलते हैं और आपको एनालाइज करने का मौका देते हैं. यू मस्ट एनालाइज, यू सी डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर, द स्टोरी एंड ट्राई टू एनालाइज इट. इट्स नॉट कि देख लिया एंड देन यस ओके, वो फिर 3 इडियट देखिए. उसके बाद अगर मस्ती के लिए देखना है तो 3 इडियट देखिए, राइट? क्या बोलते हैं, तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो, राइट? सो वो जो फन देखना है तो वो देखिए. अदरवाइज देयर आर मेनी मूवीज दैट आर gives what is a movie is a mirror of the society. I mean to say, so when there is a influx of foreigner, जब foreigner का ज्यादा influx होता है तो वो भी revolution का कारण बन सकता है. और आपको पता है कि स्पार्टा में कोई भी ये अलाउड नहीं था, बट एथेंस में क्या हुआ? एथेंस में था अलाउड. आपको पता है एथेंस में was foreigner allowed in Athens? Yes. And it was also reason of revolution, rule of authority. Okay, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? रूल ऑफ लॉ ही गवर्न करेगा. सिविक एंड मॉरल वर्च्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, इनइक्वालिटी घटानी पड़ेगी, करप्शन को कम करना पड़ेगा और एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन देने पड़ेगी. हमेशा आई विल गो फॉर एथिक्स, अदरवाइज लेट हो जाएगा. एथिक्स में मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, राइट? आपसे ही बहुत सारी चीजें पूछूंगा. मोस्ट वेलकम अमीशा. सो लेट्स टॉक अबाउट एथिक्स. एथिक्स के अलग से टीचर पढ़ाएंगे आपको. Of course, I will not. I'll teach you. आप तो IR तो इसी में पढ़ लेंगे, अदरवाइज मैं गवर्नेंस IR पढ़ाता हूँ, पॉलिटी पढ़ाता हूँ. चलिए,
ethics. Okay, ethics क्या है? What is ethics? I taught you the word. What is the meaning of ethics? Literal meaning. सेकेंड क्लास में बताया था. No, I didn't say moral principle. Ethics is a moral principle. No. थोड़ा सा और याद कीजिए. Moral is okay. Moral is okay. Morally correct. आप ज्यादा जोड़ेंगी उससे अच्छा है मैं ही जोड़ दूं. सर एथिक्स बोले तो सर हम किसी चीज को भी करते हैं, ठीक है, कोई भी एक चीज जो हम काम कर रहे होते हैं तो उस काम से रिलेटेड सर हमारा मोरल कैरेक्टर जुड़ा होता है, उस काम करने का तरीका होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये सब जोड़ के जब हम एक प्रॉपर्ली और सही ढंग से जो करते हैं सर उसको जो फॉलो करते हैं वो एथिक्स. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. सो एथिक्स होता है कि आप सही तरीके से करते हैं, राइट? अब इसको हम राइटसनेस, वेरी गुड अमीशा, इट इज अबाउट राइटसनेस, आउट टू बी, ought to be. Have you heard of ought to be? You know what ought to be done? The right thing to do. The right thing to do. It is very close relationship with justice. Am I making sense? The basic meaning of ethics or not? Yes? Okay, Janvi? Clear? इतना clear है? Shunita? Abhinav? Yes, sir. Abhinav? Unmute yourself. Can you unmute yourself, Abhinav? Yes, sir. Hello. Yeah, are you there? Yes, sir. You know what happened yesterday? Where were you there? एक्चुअली सर कल ना मेरे को थोड़ा बाहर निकलना पड़ गया था. तो एग्जिट कर लेते. एग्जिट नहीं कर पाया था सर, वो लैपटॉप का लाइट बंद करके मैं निकल गया था. अच्छा 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 अच्छा. और मैं बार बार अभिनव अभिनव अभिनव. Yes, sir. I know, sir. I am sorry for that. No. It's okay. It's okay. No issue. But just you intimate me. Just once, inform me. Yes, sir. I'm exiting. I have some work. No problem. Yes. Okay, fine. So you got the idea? What is yes, ethics? Huh? Yeah. Okay. To write about ethics. Ethics is a branch of philosophy. It is a philosophy, right? Branch of philosophy. अच्छा दिख रहा है ना अमीशा? Ethics is a branch of philosophy which study what is morally right, and what is morally wrong. What is morally wrong? ये definition है ethics का proper way में. Ethics is a branch of philosophy which study what is morally right and what is morally wrong.
right? Any confusion in this definition? No, I hope it's not. It's not. Right? Now, it is a branch of philosophy, and I told you that Socrates is called the father of ethics. Why he was called father of ethics? Because if you look at the time of Socrates, the entire philosophy was focused on, or pre-Socrates philosophy, or during Socrates' time, the entire philosophy was focused on what? Studying Natural philosophy. natural philosophy. Very good. Natural philosophy about moon, star, astronomy, right? Solar eclipse, right? The birth of land, water, right? And you know, in Indian philosophy, Panch Tattva. There's a philosophy of Panch Tattva. ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना है, पता है ना? वाटर, एयर, आग, ये सब कहते हैं, राइट? पंच तत्व हैज इट्स ऑन इंपॉर्टेंस इन इंडियन फिलॉसफी. तो वो लोग सारा ये बात चल रही थी. What Aristotle, Plato, Socrates did? Socrates said, one problem, 5 solution. ये तो मुझे नहीं पता है, ज्यादा मुझे नहीं पता है, तो I'm not expert on Indian philosophy. I'm expert on, yes, Indian thinker, but Indian philosophy is very vast, right? So मेरा कोई control नहीं है उसके ऊपर. Indian philosophy is very vast. चलिए, तो there are many Socrates was interested with ethical question of life and politics, right? How should be a good life? How should we live, right? Shall we aim at happiness or at knowledge? I'm asking question. This is Socrates' question. Shall we aim at happiness or at knowledge? पूछ सकता है, right? Socrates डाल देगा. What answer you? Answer me as per Socrates' philosophy. Who will answer me? अरे philosophy use करो. हाँ, Yes, सर. आते. सर क्वेश्चन क्या था? यही था. Shall we? क्वेश्चन लिखा हुआ है. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन लिखा हुआ है. सवाल आपके सामने. जी. सर सोक्रेटिस और प्लेटो. ठीक है सर. जिसमें प्लेटो. I'm talking about Socrates. हाँ, बोलिए. सर सोक्रेटिस सर उसका कहीं कहीं पे सर दोनों चीज नहीं था. उसको दोनों चीज एक ही इसमें चाहिए था. एक नॉलेज भी चाहिए था और हैप्पीनेस भी चाहिए था. वे ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव लाइफ. तो सर हम इस चीज दोनों को बोल सकते हैं सर. उसका कोई एक पर्टिकुलर एम हम नहीं कर सकते कि उसको सिर्फ हैप्पीनेस में था या यहाँ और लिखा हुआ है. दोनों नहीं चाहिए आपको. आपको जस्टिफाई करना है. Anyway, justify. Happiness. So I'm happy with having 5 liter, मतलब 1 liter तो पी ही सकते हैं, right? 1 liter wine और घूम रहे. I'm happy. Should we aim on it? आतिफ? हाँ. सर देखा जाएगा फिर तो इस हर एक इसमें फिर नॉलेज के इसमें भी ना कोई कॉन्स होगा सर. अच्छा, चलिए. आखिर के हिसाब से हैप्पीनेस वी शुड एम एट. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? Sir, knowledge, because Why knowledge?
because of knowledge, a state become an ideal state, and it gives a sense of justice and creates a law of virtue and many more things, which gives happiness to the citizens. Exactly, exactly. So knowledge is a priority. It is a virtue which tells you your inner instinct and what you need training. And if you are combine this all, that will give you happiness, because that will make you a good citizen. And if you're a good citizen, you will live a good life, and that will bring happiness. That will bring happiness. Atir. नहीं सर, नॉलेज का पीछे भागते भागते ना हैप्पीनेस आदमी भूल जाएगा. तो ऐसा होता है कि since होता है, we have to see sometimes there is a balance, but जो balance करता है वो ज़्यादा disbalance हो जाता है, right? I'm not targeting any, but if you not, I have no intention to target any section of the society, but if if you look at कि जो लोग 12वीं के बाद काम भी करने लग जाते हैं, money gives happiness, several mobile, even car, even many things. It gives happiness, but it doesn't give knowledge. It doesn't give knowledge. Okay, at the certain point of happiness, what you do, if you're happy, then of course you will be unhappy. Why unhappy? Because you will compare yourself with others. आप कंपेयर करेंगे, अच्छा उसके पास तो ऑडी है, मैं तो बस एक छोटी सी कार ले पाया हूं. कौन सी 12वीं में अगर कोई नैनो, अरे नहीं, नैनो कोई नहीं लेता, उससे अच्छा ऑटो ले लो, राइट? हाँ, ऑल्टो. ये 12वीं में कोई काम करके होंडा सिटी, मान लीजिए कि बहुत कमाता है तो होंडा सिटी ले लिया, बट उसने देखा कि दूसरा तो ऑडी में चल रहा है या 2 से बड़ी गाड़ी है, इवन गाड़ी के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है. इफ यू आर हैप्पी, इट विल गिव यू अनहैप्पीनेस, बट इफ यू हैव नॉलेज, you will be happy with this, even a small thing. Small is beautiful. Exactly, Adi. Have you heard of small is beautiful? Yes. So if you have knowledge, you will inquire your positions. Okay, I have this much of water, sufficient for me, right? No need of accumulation. Why should I accumulate? And for whom I should accumulate, right? And I'm giving you one question, right? So can we justify living in opulence? Sir, visible नहीं है screen. एक मिनट, अभी हो जाएगा. While elsewhere people are starving. अच्छा, विजिबल नहीं है, मुझे ये बता दीजिए. जानवी, इज इट विजिबल? नो. ओके, 1 minute. ब्लैक स्क्रीन. 1 minute. इसको मैं सेव कर लेता हूं सवाल को. फिर पता नहीं सवाल है या कट गया. है. So our discussion has raised another question of very important question, and the question is in front of you. Yes, Ans. So can we justify living in opulence while elsewhere people are starving? This is a very moral question. Answer it.
सर मैं करूँ? हाँ बोलो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ओपुलेंस का मतलब ये होगा कि रिच, लाइक आपके पास लिविंग विद असीमित पैसा है। लग्जरीज एंड वेल्थ, है ना सर? हाँ, वेल्थ। वेल्थ एंड लग्जरीज। वेल्थ का मतलब अपलेंस, अपलेंस मतलब आपके पास पैसा भी है और आप इंजॉय कर रहे हो। हाँ, इतना सोना पहन लिया, खाने में 50 खाना ले आया, खा रहे हैं। मतलब हाँ, मतलब 4 गाड़ी है, हर जगह एसी चला रहे हैं, शादियां कर रहे हैं तो 500 करोड़ खर्च कर दिया। दैट इज अपलेंस। ओके। यस सर। तो कैन वी जस्टिफाई? नो सर, लाइक व्हाई? मुझे लगता है ये रहना सही है। while as well people are starving because सर अगर हम सर हम लाइफ में क्या चाहते हैं? एक सुखी जीवन चाहते हैं लाइफ में। वो कैसे आएगा सुखी? और अ गुड मैं तो लाइफ, सुखी, गुड मैं तो सुख नहीं हूँ होंडा सिटी से। जानवी ने मुझे होंडा सिटी दिया, बोला कि सर होंडा सिटी कमा लेंगे, अगर 12वीं के बाद कमा लेंगे तो होंडा सिटी खरीद सकते हैं। चलो, वो भी बड़ा मुश्किल है होंडा सिटी खरीदना। अगर खरीद लिया फिर भी मैं हैप्पी नहीं हूँ। ठीक है, मैं दुखी ये हूँ कि यार मुझे अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, मेरी शादी नहीं हुई है, होंडा सिटी में अकेले चला रहा हूँ। राइट, पैसे हैं मेरे पास, दोस्त भी है, फिर भी मैं बट एट द सेम टाइम पीपल आर स्टार्विंग। Yes, these all are ethical question. बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। इसमें हमें अपने आप को परखना पड़ेगा और रियलाइज करना पड़ेगा। सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा? सर वो नॉलेज और एजुकेशन। यस, नॉलेज। वहीं से तो मैं क्वेश्चन बढ़ाया हूँ, इस सवाल से दूसरा सवाल आपके सामने पुट किया। तो सर कि हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हमारे पास जो है वो सामने के पास नहीं है। हमारे पास जो है तो हमें उससे ही थैंक्स टू सर, थैंक्स टू गॉड करना पड़ेगा, शुक्र अदा करना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास ये है, बहुत है। तो सामने वाले के पास वो भी नहीं है, या लाइक हमारे पास रहने के लिए घर है, सामने वाला सड़क पे रह रहा है, हमारे पास खाने के लिए फूड है, तो वो बट 3 इंसान साल कभी भूखा नीचे रह नहीं रहा है। देखता, इंसान ऊपर देखता है। पता है आदित्य, जैसे मेरे पास गाड़ी है ना एक, तो आदमी चाहता है कि अगर मान लो कि मैं कुछ मान लीजिए मैं अपना एक मोबाइल चला रहा हूँ छोटा सा, तो वो स्मार्टफोन अट्रैक्ट करता है उसको गरीब अट्रैक्ट नहीं करता, उसको स्मार्टफोन अट्रैक्ट करता है। और स्मार्टफोन वाले को वो क्या बोलते हैं, आईफोन अट्रैक्ट करता है। दिस इज नॉर्मल आदित्य। सर पर ये मैं बोलूंगा इट्स अ बिटर ट्रूथ अबाउट द सोसाइटी। It's better, like truth about of the society, bitter truth of the bitter truth. Yeah, that is truth and truth exists, fine. But जो कॉमन इंसान होता है वो कभी भी अपने से नीचे बहुत कम देखता है, बहुत कम। और इवन तो बहुत हैट्रेट भी करता है गरीबों का, बच जाए यहाँ से। वो आएगा आपको रोड पे मांगने, है चल यहाँ से निकल। राइट, लोग अपने से ऊपर देखता है। अगर होंडा सिटी है तो वो ऑडी की तरफ देखता है, अगर उसके पास छोटी सी घर है वो बांग्ला की तरफ देखता है। तो आप जो कह रहे हैं कि थैंक्स बोलना चाहिए गॉड को कि मेरे पास बहुत कुछ है, लोगों के पास तो ये भी नहीं है, ये नॉलेज से ही आएगा कि यू हैव टू क्रॉस एग्जामिन द एंटायर सोसाइटी, योर अप एंड डाउन बोथ, द रेलेवेंस ऑफ द money that you possess, right? So if if small car can carry you from this part of the city to that part of city, it's fine. Why BMW? And it will come through the cross examination of knowledge, existing knowledge. Okay सर इसका आंसर क्या होगा जो आपने बोला था ना कि मुझे जो आपने सिचुएशन में डाल दिया था कि कॉमन पीपल हमेशा नीचे नहीं देखता, वो ऊपर ही दिखेगा। इन केस अगर मुझसे इंटरव्यू में या हम किसी से भी इंटरव्यू में ये सवाल पूछ ही लिया, तब कॉमन पीपल तो देखेगा नहीं, तो हम इस चीज को कैसे टैकल कर लेंगे सर? अब दूसरे को जवाब देने देते हैं, राइट? हाँ सार्थक, गो अहेड। सर इसका मेरे को लगता है दैट बीइंग अ ह्यूमन, हम यूजुअली अपने अपना देखते हैं कि अपना बेटर हो
and we would use our knowledge आज हम 10 बजे तक to पढ़ेंगे, improve right? our own status. Hans, today we'll study by 10 o'clock, right? We are not going because कि ये ethical सवाल है और ऐसी चर्चा होती रहेगी, right? और जब तक ठीक से नहीं पढ़ लेंगे, थोड़ा मैं थियरी पढ़ाऊंगा, कौन-कौन से ऑथर आते हैं, कौन-कौन से ऑथर आपको एथिक्स में पढ़ने पड़ेंगे और सारे बहुत कुछ आप पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ेंगे. Yes, Hans, you go ahead. As we human being, yeah. Like being human beings, हम अपने self हमेशा so what we have, we'll always apply it for our own self development rather than looking for someone else, either above or below us. Achha. And besides this, there are billionaires so like almost like 90% plus salaries अपनी donate करते हैं development of, but still उनको benefit नहीं हो रहा है and still people are starving. So इस केस में पता नहीं क्या कह सकते हैं. But like मुझे the ones who are at the top, can a human being live in isolation or vacuum? no. जो आगे ना देखे पीछे ना देखे, जैसे आपने बोला कि ना हम आगे देखे गरीबों के तरफ ना हम अमीरों के तरफ देखे अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिस. Yes sir, that's true. मतलब हर कोई बस ये देखता है ऊपर की like वो इस लेवल पे है एंड आप भी there, अपना सेल्फ डेवलपमेंट जो अपने नीचे है एंड अपना वेल्थ है उसको यूज करके rather than using it. ये सारे for क्वेश्चंस someone आप जरूर else. लिख लीजिएगा, राइट? जो ये सारे एथिक्स में सारे सवाल ही आते हैं एंड देन एक्सप्लेनेशन, राइट? हाँ, यस, बोलिए हंस. मतलब मैं बस वेल्थ एंड नॉलेज अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे यूज करेगा rather than using it on someone else. Like मेन ये था. And that is why people who are starving वहीं पे. राइट, बट एरिस्टोटल तो कहता है कि वेल्थ जो है it gives sense of virtue and it gives sense of honor and it also gives sense of what do you call altruism, right? Distribution of the wealth, like Gandhi idea of trusteeship. The rich should be the trustee of the poor, right? So there should be distribution. The money should go from rich to the poor, right? Ans? So, Yes sir. Yes. Most welcome. Janvi. yes, sir. So, I think, sir, one cannot justify living in opulence because opulence is extreme of luxuries, extreme of Exactly. wealth. And Exactly. anything in extreme is not good. Everyone wants to be in a stable and a well, established place. But that is not necessary that you need to be in opulent of anything. So I feel, Right. sir, there is a concept of CSR, that is corporate social responsibility. Exactly. We take that Why does into it come? account. Why does it come? Yes, Because the yes, corporate was not realizing. Exactly. And the concept basically is that whatever you're taking, the profits that the companies are making is because of the resources that they are utilizing that is belongs to the community. And Human one labor. must give, Human labor. yes, one must give that back. Whatever he's Right. taking, he must give that back. And I think Yeah. this is what this question is asking, that while everybody else is starving and you have created your empire, you must give back to the people from whom you have taken those resources. Exactly. So the balance here is important. Sharing the prosperity here is important. You're And talking I like think- Lasky or TH Green. Yes. yeah, Yes. so that Yeah. is what I was saying for this answer. Exactly. So since individual wealth is not individuals, it belongs to the society. Yes, individual merit matter, it's their capacity matter, but their wealth is not generated by self. There are contribution of the society, other portion of the society, right? So like you have labor, you have without human labor you cannot do anything. Right? So since you have generated wealth from the society, it's your responsibility, the moral responsibility to return to the society, right? So since and Janvi has rightly pointed out, it is a moral, right? It is a moral voice, and living in opulence
cannot be justified at any point of time. But if you see in the society, many people does it. आपने वो शादी के बारे में सुना है जिसमें 500 करोड़ का कुछ केवल वो था, ड्रेस था, द रेड्डी ब्रदर्स ऑफ आंध्र प्रदेश. ऐसे कहानियां आ जाती है, राइट? So these are all ethical. One more question I'm asking. One more ethical question I'm asking. Can we justify? No. Same question मैं repeat कर रहा था. Okay. 1 minute. Is going to war justified in case where it is likely that innocent people will be killed? Is it that? No. उसने ऐसा कुछ बोला, मैंने same. He was asking about Socrates' morality. Socrates asked like this question, right? Is going to war justified in case where it is likely that innocent people will be killed? So Answer. Yesterday Biden defended America and his side by मतलब उन्होंने अफगानिस्तान में से अपनी ट्रूप हटा ली है ना, तो उसके लिए वो अपने आप को डिफेंड कर रहा था. तो there he said that going to war is not always a solution to remake a country. So he quoted yesterday on the article was there in the Hindu. When you have shared this statement to me of the Biden, and he's an American president, there's one story written by Harshankar Persai, Bhere or Bheria. Have you read about Bhere or Bheria? नहीं? किसी ने नहीं पढ़ा? ठीक है. You know Bheria, wolf? What if wolf, try to portray itself as a bear sheep? What will you say? यही तो है आते. It is possible. तब क्या होगा जब भेड़िया अपने आप को ये दिखाना चाहे कि मैं भेड़ हूं, मैं आपके बीच का हूं, मैं अच्छे से शासन करूंगा, और जब उसे फिर से राजा बना दिया तो वो क्या करेगा? उन भेड़ों को वो खाएगा, one by one खाएगा वो. Right? That is US 11. Right? Is a wolf of the forest of international relation, right? Act of many countries. Anyway, I don't know whether you know the US withdrawal from Vietnam. I don't know whether you have information about the US withdrawal from Vietnam. Yes. Yes, sir. वो हो ची मिन जो वहाँ के वो थे हेड लीडर थे वहाँ पे. यस सर. वहाँ पे जब वॉर हुई थी तो वियतनाम ने अपना जियोग्राफिकल फायदा उठाते हुए जो यूएस वॉर हार गया था. यूएस ने विड्रॉ कर लिया था, हारने की तो बात नहीं है, विड्रॉ कर लिया था. और उसके within 1 year approximately 80,000 people were killed. 80,000 people were killed. Right?
they have withdrawn from Afghanistan. Let's see what will happen. Many things is, yet to come. Many things yet to come. Okay, give me my answer. हम बाइडेन के पास नहीं जाएंगे. Is going to war justified in case where it is likely that innocent people will be killed? Who will answer it? It's a very ethical question. This kind of question was asked by Socrates. He was very courageous. I told you in the early class, right? He was very funny. He was very satirical. वो फन में पूछ लेता था. अच्छा बताइए क्या ये सही है? और लोगों की आग लग जाती थी. राइट? मैंने बताया कि उसने कुछ सवाल पूछे, उसे घर जला दिए गए. Yeah, who will answer this? Ans, Amisha, Avinav, Ashad. अरे बोलो कुछ. Yes sir. क्या होगा अगर आपको आप अगर प्रेसिडेंट हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या ये सवाल से पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? जैसे कि अगर डायरेक्टली देखें इसमें तो डायरेक्ट मतलब कि अगर हम किसी को वॉर जा रहे हैं और इनोसेंट पीपल मर रहे हैं तो वो सही नहीं है. लेकिन अगर मान लीजिए कि अफगानिस्तान में जैसे तालिबान 1996 में आया था, वहाँ पे तो वो इनोसेंट पीपल को मार ही रहा था. तो अगर हम उस सिचुएशन में अगर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो किलिंग पहले ही हो रही है, तो हम मतलब कि मेजोरिटी को बचाना चाह रहे हैं. अगर वॉर हो रहा है तो उसमें मतलब कि जान तो जाएगा ही, वो तो है. लेकिन अगर हम मेजोरिटी को, मेरा नियत अगर अच्छा है, मेजोरिटी को बचाने के लिए जा रहे हैं, और उसमें अगर ये हो रहा है क्योंकि वहाँ पे पहले ही से मतलब कि किलिंग्स हो रही है. अच्छा, तो मुझे यूएस ने जो अटैक किया था, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इन अफगानिस्तान 2001, उनका ये था कि हमें तालिबान को खत्म कर देना है और लोगों को वहाँ पे बचाना है. उनका पर्सनल इंटरेस्ट है. लेकिन अगर उस केस में देखें कि अगर ऐसा हो रहा है, मतलब अगर उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता और वो लोग मतलब मोरली जाते कि वहाँ के लोग को बचाने के लिए जा रहे हैं, तो उस केस में जस्टिफाई कर सकते हैं. लेकिन वो तो तालिबान से लड़ने नहीं जा रहे थे, वो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए गए थे. राइट. एंड आपको पता है कि करीब 2 से 2.5 लाख लोग मारे गए पूरे ऑपरेशन में. 2.5 लाख अफगानी जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तालिबान से. Right? What happened in Hiroshima and Nagasaki? Right? See, this all question abhi nahi पूछ रहे, but this question was asked by, I'm repeating this again and again, asked by Socrates, and it's still relevant, isn't it? Janvi, Ila, Atil, Ashad, Ansh, Amisha, Avinav, don't you find this is a very relevant question? Right? Till why we study Socrates? Because he is very classical question that is relevant till today. That's why he is a classical thinker. Right? चलिए, ये क्वेश्चंस बड़ा ही डिबेटेबल है. अगर मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान का वो अटैक हुआ था ना, वो कौन सा कश्मीर में अटैक होने के बाद वो बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था पुलवामा अटैक के बाद, राइट? एंड इट वाज अपीयरिंग दैट इंडिया पाकिस्तान इज गोइंग फॉर वॉर, राइट? मुझे तो लग रहा था कि छोटा सा कुछ होगा, बट थैंक्स टू the statesmanship of the world also, and then Pakistan also restrained themselves, and there is no war. और लोग आ रहे थे, we want peace, no war. आपको इंटरनेशनल बोल देंगे, आप क्या करेंगे? If you say अगर इंडिया पाकिस्तान वार करने जा रही है,
And if you say that I want peace, no war, people will say you are cowardice, right? You are coward. You are coward, right? बहुत कायर हो तुम, right? चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाओ, right? You are anti-national, कुछ कोई ये कह सकता है, different statement में come into play, right? लिखिए, थोड़ा और पढ़ाना है हमें. देखिए, ethics, अब ये 3 क्वेश्चन लिखने के बाद लिखिए, ethics deals with such questions. At all levels. Its subject consists of the fundamental issue. Issues of practical decision making. Practical decision making. And its major concern दिख रहा है? I hope it is visible. Yes? Okay, write it down. If you have done it, then let me know. Good, Ashad, Ans, Janvi, Ila, done? Okay. Abhinav, लिख लिया? Abhinav, done? अभिनव का नहीं हुआ शायद. अभिनव, आपने you have done? Its subject consists fundamental issues of practical decision making, and its major concern includes the nature of ultimate value. Nature of ultimate value and standards by which human action can be judged. By which human action can be judged right or wrong. लिखिए. हो जाए तो मुझे बताइएगा, कहीं पे छूटा हुआ हो तो मुझे बताइएगा कि सर यहाँ से छूट गया, मुझे थोड़ा सा. और क्लास का काम क्लास में ही खत्म करिए. ये नहीं कि हाँ बाद में फिर से वीडियो देखेंगे, फिर से लिख लेंगे. नो, मैं तो ऑलरेडी इतना स्लो पढ़ाता हूँ. तो एक बार क्लास में बोर हो और फिर बोर होने के लिए अलग से वीडियो खोल लो. हाँ, मेरा चेहरा फिर से देखो, राइट? मत देखो,
क्लास में ही देखो, ठीक है? क्लास में ही खत्म करो इसको। डन अभिनव? हाँ, फिर मेरा फोटो लगा लो आतिफ, वो ये खोलने की जरूरत नहीं है। डन, ओके। और एक लाइन और लिखवाऊंगा मैं, 1-2 लाइन, फिर कुछ सवाल। ये समझ में आया ये जो मैंने लिखवाया? Right? Ethics deals with such question of all labels. Its subject consists fundamental issue of practical decision making, and major concern include the nature of ultimate value and standard by which human action can be judged, right or wrong. Did you get the idea? Akid, Ansh, Amisha, Avinav, Ila, Janvi, Sarthak, Sunita. कहीं पे समझ ना आए तो मुझे जरूर बताना, right? Write down. Ethics is based on moral principles. Moral principles with and concern with what is good for individual and society at large. What is good for individual and society at large. ये लिख लीजिए पहले। Ethics is based on moral principles and concerned with what is good for individual and society at large. Done? Okay. Okay. जो ethics है ये एक नैतिक सिद्धांत पर आधारित है जो ये कंसर्न करता है कि सही क्या है और गलत क्या है, एक व्यक्ति के लिए और समाज के लिए, एक बृहद तौर पे व्यक्ति और समाज के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है नैतिक तौर पे। राइट राइट ओके, सो ये मैंने कर दिया। अच्छा, ये कौन हिंदी में एक्सप्लेन करेगा? एथिक्स डील्स विद क्वेश्चंस एट ऑल लेवल। किसकी हिंदी सही है? हु क्लेम्स दैट मैं सर मेरी हिंदी ठीक है, मैं हिंदी में इसको आपको बता सकता हूँ। नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा के अलावा। आई नो हमेशा का हिंदी बहुत अच्छा है, बट उसकी जो इंग्लिश अच्छी है, बट थोड़ा सा वो कम, एक होता है ना कॉन्फिडेंस लैक कर रही है, अदरवाइज कुछ नहीं है। शी नोज एवरीथिंग। हु विल स्पीक? कोई नहीं। इला, डू यू नो हिंदी? आई हर्ड यू many times. Your Hindi is good. Yes, sir. Sir, ethics deal with such questions at all levels. Sir, मतलब हिंदी में बोलना है, इसको ट्रांसलेट करना है? एक्सप्लेन कर दीजिए ना, ट्रांसलेट नहीं करना, सारांश बता दीजिए। Okay. So ethic consists of our moral virtues। जो हमारी moral virtues होती हैं वो ethics होते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है एथिक्स, इट कंटेन्स ऑल इश्यूज लाइक प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग जो है, और जो मेजर कंसर्न है, सर ऊपर करना थोड़ा, जो मेजर कंसर्न्स हैं लाइक नेचर ऑफ अल्टीमेट वैल्यू एंड स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन एक्शन कैन बी जज्ड राइट और रॉन्ग। मतलब पहले तो डिसीजन मेकिंग की पावर इसमें, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, और उसके बाद जितनी भी अल्टीमेट वैल्यू और जो स्टैंडर्ड्स हैं ह्यूमंस के, किस वैल्यू और किस स्टैंडर्ड के लेवल पे हम उसको राइट और रॉन्ग जज कर सकते हैं।
ये हमारे एथिकल वर्च्यूज, ये एथिक्स के सब्जेक्ट में इंक्लूडेड होता है. Include. बेसिकली एथिक का मतलब ट्रक से ये हो सकता है कि वी हैव टू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीबडी एंड जस्टिस. वेलफेयर और जस्टिस को साथ में लेके चलना है, तो वी विल बी मॉरली करेक्ट. यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड. यस जानवी, आप कुछ कह रही थी. Yes, you can, then you should. You go ahead. So ethics जो सब्जेक्ट है वो हर लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस को उठाता है कि Right. एक इंसान को क्या सही और क्या गलत है इसकी समझ होनी चाहिए, और कोई भी सिचुएशन या परिस्थिति में क्या करना चाहिए और किस तरीके से सोचना चाहिए वो हमें एथिक्स से समझ आता है. सो बेसिकली इसमें यह होता है कि एक सोसाइटी के लिए जो एट लार्ज, मतलब जब इंडिविजुअल सारे एक पॉइंट पे देखिए उनके लिए, और एक अकेले इंडिविजुअल के पर्सनल एम्बिशन के लिए क्या सही है और क्या गलत, वो एथिक्स में आता है. तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक इंसान सही डिसीजन मेकिंग कर पाए, और उसमें वही उसका मेजर गोल होता है एथिक्स में, कि कहीं पे भी किसी को कोई तकलीफ ना हो और सबको लेकर चल पाए, और अपना भी उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. So basically this is ethics की morally right जो हो. बहुत बढ़िया. हमारे जो एक्शन होता है, राइट, हम कुछ ना हर दिन कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, राइट, और हम जो एक्शन मतलब कोई काम करते हैं, घर में जाते हैं और छोटे भाई को थप्पड़ लगा देते हैं, राइट, या कुछ कह देते हैं, राइट. तो हम जो एक्शन करते हैं, या हम गाड़ी चलाते हैं, या हम खाना खाते हैं, या हम घर में दूसरे को किस तरह से बात करते हैं, जो ह्यूमन एक्शन है, जो भी एक्शन हो. कल आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो बहुत सारी बातें होगी, बहुत लोगों से आपको मिलना होगा, बहुत सारे ऊपर नीचे घूस देने आएंगे, बहुत सारे लोग, हाँ, टेबल के नीचे से, है ना, डील करने आएंगे. कुछ आपके जो बड़े साहब होंगे वो आपको प्रेशर कर देंगे, अच्छा इनका काम कर दो, आप फंस जाएंगे, राइट. एथिक्स क्या है? एक प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग के सामने ये आपको सवाल खड़ा करता है कि आपको किस स्टैंडर्ड और किस वैल्यू के आधार पर आपको अपना एक्शन जज करना है. समझ में आया? आप जो भी एक्शन करेंगे एज ए ब्यूरोक्रेट, राइट, आपके सामने बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस आएंगे. आपका बॉस आपको फोन करेगा, अच्छा आतिर ऐसा करो, ये शर्मा जी हैं, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, कर दो काम. बट आप देखेंगे शर्मा जी ना फॉर्म भरा ना कुछ किया, सीधा आ गए कॉन्ट्रैक्ट मांगने, और ये भी है कि इन्हीं को देना है. अब आप क्या करेंगे, राइट? सो एथिक्स टीचेस यू the many values and standards on which you decide your action, right? Am I making sense or not? सर ये तो मुझे भी पता है. ठीक है, okay. Now look at some questions. So I'm not going to teach you ethics for your bureaucrat, but larger one. Okay, my focus is not on particularly your subject. It is a very larger one. So for example, question of war, right? You know, question of environment. This also deals with, you know, question on terrorism, right? Question on LGBT rights, LGBTQ rights, question on human rights.
right? Question on minority rights, question on let's say women rights, all deal with some ethical, some some ethical value, some ethical ethics. Ethics is to apply here, right? So all deal with, right, about moral decision. What is good, what is bad, how to live a good life, what is good life, right? For example, एक और एग्जाम्पल देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट है. ये तो लार्जर है, थोड़ा सा मैं इसको क्वेश्चन ऑन गवर्नमेंट डिसीजन. एक ऐसा समय आएगा जब गवर्नमेंट बोलेगा, वो आईएएस देखा आपने, बोला कि अपना लाठी उठाओ सर फोड़ दो किसानों का. Have you seen that video? Haryana IAS. He is not eligible to become IAS. I'm telling you. Giving examination and passing it. मैं तो अगर मुझे कहा जाए तो उसका खाना बंद कर दो 4 दिन. वो खुद उगाता नहीं कुछ, किसान के उगाए हुए अन्न को खाता है वो. We all city people are parasite. The parasite on farmers, grains. Right? अगर हम खाते हैं, thanks to the farmer, not to the God, thanks to the farmer. They cultivate and then we eat. Money is exchange, man. Money, what is money? Right? वो रात में मोदी जी आ गए और बोले कि मनी ये 500,000 हो गया आपका पूरा, हो गया पूरा. Right? It's a dumb. Right? So when you take government decision, right, then you apply ethics. I don't know कब वो पास किया वो IAS, I don't know. ethics बाद में पेपर आया है, हो सकता है पहले पास किया हुआ हो और उसने ethics ना पढ़ा हो. Right? But ये तो moral, ये तो अगर ethics पढ़े ना पढ़े, actually introduce करना पड़ा bureaucracy में. But this is a basic value, right? Basic value of democracy. In democracy, everyone has the right to protest, right? कल आपको गवर्नमेंट ये कह दे कि आप अपना गन उठाइए, सरकारी गन, और भूनना शुरू कर दीजिए, मारना शुरू कर दीजिए. Will you follow that? I'm giving you one example. When the Indian Air Force was suggested to tackle down the Naxal problem, Air Force denied it. बोला कि वो मेरे आदमी हैं, हम दुश्मन को मारने के लिए बने हैं, हम अपने इंसान को, अपने ही लोगों को मारने के लिए नहीं बने हुए हैं. It is your problem, law and order problem. You have police, deal with it. Do you know this news? The armed forces once upon a time have been suggested कि okay, जो हमारे पास ये Naxal का मीनेश है, it is the biggest terrorism. They are terror and sometimes they are called anti-nationals. You should deal with it. Army और Air Force ने मना कर दिया, बोला कि आपका अगर पुलिस ट्रेन नहीं है, हम ट्रेन करेंगे उनको. We will train your police, but we are not made, our purpose is not to go and beat our own people, right? The purpose of army to deal with the enemy, and they are not our enemy. That was morality. ये तो इलाका आपने जो बोला है वो थोड़ा सा actually controversial था. Hyderabad was not part of the state, and then it was not a police action, it was an army action, right? And India was that part was मिला लिया गया. Yes, आतिर क्या कहना चाहते हो? सर मैं कुछ तो कहना चाह रहा था पर भूल गया. कोई बात. What about abortion? Have you heard of abortion?
abortion. Should women have right to abortion? अभी यूएस में बहुत चल रहा है. Are you following what is going in US, United Nation? US नहीं, UN नहीं, US. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक ऐसा स्टेट है जो एबॉर्शन का न्यू लॉ ला रही है, और लॉ ये कहती है कि अगर आपने 6 वीक तक एबॉर्शन नहीं कराया तो यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डू एबॉर्शन. दिस इज मोरल क्वेश्चन, right, about women's health, about women's health. क्या है इला? यस, इंडिया में तो बहुत कुछ है. एलजीबीटी को अभी तक कुछ दिन तक पहले तक क्रिमिनल ऑफेंस था. गेज, लेस्बियन, तो इट वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस. Even in our house, the transgender are not acceptable in our household. अगर उनका बच्चा ट्रांसजेंडर हो गया, they start hating. आपने किसी ने बोल मूवी देखी है? बोल, जरूर देखें. Law exists, but law cannot do anything without social acceptability. At the society level, if you not allow law, only a deterrence. Law is only a deterrence. There is a law against the atrocities of SC and ST. But atrocities is continuing. There are law against child marriage. Child marriage is continuing. There are law for transgender, but transgender is unacceptable in society, even to the family. Yeah, this is the question. This is the question. This is the moral questions, right? Education could be the one means. Yes, Atif. इस टाइम मैंने उत्तर दे दिया था. यस, बोलो. हाँ सर, ये अभी ध्यान आया इला का देख के मुझे. सर एथिक्स जो यूपीएससी में हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है, पर सर हम इम्प्लीमेंट कैसे करें? क्योंकि सर मैं जॉब कर चुका हूँ पहले, तो सर उसमें भी हम लाइक कंपनीज में हमारा एथिक्स का भी सेक्शन था. हर मंथली में हमें पढ़ाया जाता था एथिक्स एंड ऑल के. कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लाइंट का बीच में कुछ रहता है हमारा दूरी एंड ऑल, और सेम चीज एथिक्स सर पढ़े ही है. और पर इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन. जैसे कि भी आपने हरियाणा वाला केस बताया, अगर कोई एथिक्स पढ़ेगा तो हम पढ़ तो रहे, पर like what is the use of it if you are not implementing in our daily life? Exactly. अब मैंने आपको पढ़ने और सीखने में अंतर बताया, right? So there is a teaching and there are आपको सिखाना, दो अलग चीज है. उस दिन काफी बात हुई थी जानवी से कि एजुकेशन डिफरेंस लाता है या नहीं लाता है इंसान के लाइफ में. एजुकेशन तब चेंजेस लाता है जब टीचर आपको सिखा दे. पढ़ा देना बहुत बड़ी बात नहीं है. पढ़ा देना बहुत बड़ी बात नहीं है. कुछ भी किताब पढ़ा, 2-4 किताबों को पढ़ा दिया, आपको क्या करना. बट आपको जो सिखा दे, आपके जीवन में चेंजेस ला दे, दैट इज ट्रू टीचर, राइट? ठीक है. तो बाउट तो बोल देखना आप लोग. हैव यू हर्ड अ बोल मूवी? जी सर, मैंने देखा है, बहुत अच्छा मूवी. मैंने 25 टाइम्स देखा है, एक बार नहीं 25 बार, एटलीस्ट 25 बार, उससे ज्यादा बार देखा है. एक इंसिडेंट्स में बता सकता हूँ, एक इंसिडेंट.
अच्छा, आपने पिंजर मूवी देखी है यार? कुछ मूवी देखो। नहीं, मैं मूवी भी बताता रहूंगा, आप लोग देखते रहिए, राइट? जानवी, पिंजर इज रिटन, पिंजर वॉज अ नोवेल। पिंजर, मैं तो यही बताऊंगा जो आपको एहसास दे, वो मूवी एहसास दे, आपको अपने जीवन का मायना बताए, राइट? ये पिंजर अमृता प्रीतम की नोवेल है। अगर आपने अमृता प्रीतम के बारे में सुना है, अमृता प्रीतम was a novelist. During partition, she moved out from West, Punjab. और जे लगा दो, ये मेरी मिस्टेक है, यस, ले, यस, पिंजर, यस, पिंजर मीन्स a skeleton. ना, और कोई नहीं, अमृता प्रीतम की जो राइटअप है उसी पे वो मूवी बनी है, और उर्मिला मातोंडकर एंड मनोज वाजपेयी। सो ये सब मूवी देखिए, बोल, पिंजर, नहीं देखा तो देखिए, लाइफ में कभी टाइम मौका मिले जरूर देखिएगा, घर पे बैठ के आराम से फैमिली के साथ देखिएगा, राइट? आप अपने फैमिली को भी दिखाइएगा, खुद भी देखिएगा, राइट? और बहस भी कीजिएगा फैमिली में, डिस्कस थिंग्स इन योर फैमिली। अदरवाइज पता चला आप यहाँ बदल गए और फिर फैमिली से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, फैमिली बोली कि अच्छा बेटा तुम तो बहुत बदल गए हो आजकल, तुम्हारे व्यूज बहुत बदल गए हैं, राइट? और फिर होगा क्या, आपके और फैमिली में कॉन्ट्रडिक्शन। आप बोलेंगे मामा मुझे खुद का लड़का चाहिए, खुद चॉइस, आई हैव राइट टू चॉइस, और मम्मी बोलेगी बेटा राइट टू चॉइस ये हमारे दादा ने नहीं करा, तुम कैसे कर लोगे, राइट? हमारे दादा ने हमारी मम्मी के लिए लड़का लाया, हमारे बाप ने मेरे लिए लड़का लाया, तेरा बाप तेरे लिए लड़का लाएंगे, तू ये राइट टू चॉइस कहां से आ गया? मेरे बच्चे कुछ ठीक तो है, या झाड़ फूक करवा दूं, राइट? सब ठीक ठाक तो है, राइट? वो झाड़ फूक भी करना शुरू कर देंगे, कुछ मिट्टी लगा देंगे, कुछ ये रख देंगे फूल, कुछ पैर में काला धागा बांध देंगे कि शायद मेरे बच्चे को नजर न लग गया। ये लड़के के बारे में भी है आतिर। आप बोलेंगे सर मामा मुझे ये लड़की पसंद है, और अलग अलग सवाल शुरू हो जाएंगे, राइट? ये इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स एंड इट्स अबाउट एवरीवन, right? So you watch it in the family, discuss it in the family, what is right, what is wrong. Of course there will be contradiction, there will be huge heated debate, but try to convince your family as per your capacity, right? So कुछ मूवी ऐसे बताते जाऊंगा मैं, ऐसे चीजें आती रहेंगी तो मैं बताते जाऊंगा। मैं जब था तब देखा करता था, अब मैं नहीं देखता हूं, मैं टाइम ही नहीं मिल पाता है, राइट? एनीवे डन, ओके, मुझे और कुछ लिखवाना है। अरे भैया 10 बज गए, ऐसे थोड़ा सा और चलेगा, 5-7, राइट? आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू। राइट? सो अब लिखिए, ethics is about those, लिखिए, ethics is about moral decision, what is good and bad, and what is bad. We try to minimize
lives back, and we to try to minimize wrong or inequality. That is good. तो जो आतिर आप कह रहे थे कि जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं तो बहुत सारे प्रैक्टिस आते हैं, राइट, वो आपको एग्जैक्ट डिसीजन नहीं लेने देते। बट आतिर मेरे भाई, आप कर क्या सकते हो, आप ये कर सकते हो कि जो डैमेज है उसको मिनिमाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैक्सिमाइज कर दिया, ऑर्डर दे दिया पुलिस वालों को, डीएम बन गए तो कि मैं देख लूंगा, मैं ये ऑर्डर देता हूं, आप सर फोड़ दो, राइट। सर मैं उसके फेवर में नहीं हूँ सर। एग्जैक्टली मतलब मैं तो उसका फेवर में, मैं खुद वीडियो देख के मैं अंदर ही अंदर सोचा था, मैं बोल रहा था ये सिविल सर्विस कैसे बन गया, ये कैसे, मतलब हाउ, उसको टीचर ने पढ़ाया सिखाया नहीं जीवन में, मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसी का रिलेवेंस में बोला था सर, ये पढ़ के ऐसा नहीं कि आप पढ़ेंगे तो बनेंगे नहीं, आप पढ़ के बन जाएंगे, यस, बट वो सीखा नहीं कुछ, राइट। आप देखेंगे बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल वो पढ़ के बन जाते हैं और वो सीखते नहीं, जीवन में कभी लाया नहीं उन्होंने, राइट। आप बड़े बड़े प्रोफेसर के बच्चे देखेंगे और उसके बच्चे ने अगर बोल दिया कि मुझे इंटरकास्ट मैरिज करना है, वो फायर हो जाता है। बड़े बड़े प्रोफेसर अपनी बेटी पत्नी को पीटते हैं, टेलिंग यू द फैक्ट, राइट। वो बहुत एजुकेटेड है सर। रिसेंटली अभी एक मध्य प्रदेश के भोपाल में एक आईपीएस ऑफिसर था, उसका बीवी को पिटने का वायरल वीडियो। हाँ, ये तो एक कहानी है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों आया 2005 में? ये इसलिए आया कि डोमेस्टिक वायलेंस इज रियलिटी इन आवर सोसाइटी, राइट। अच्छा लिखिए, एथिक्स डिराइव्ड फ्रॉम, अब ये बोलेंगे कि एथिक्स का सोर्स क्या है सर? क्या वही एथिक्स मेरे लिए, क्या वही राइट आपके लिए राइट है जो मेरे लिए है? नो। देखिए, एथिक्स डिराइव्ड फ्रॉम, मुझको लग रहा है कि 2-3 घंटा और पढ़ाऊं मैं, राइट, बट टाइम इज लिमिटेड एंड आई हैव so many tasks to perform. Ethics derived from, first लिखिए, religion, second philosophy, third culture, fourth family, fifth education, sixth peers group. peers group मतलब फ्रेंडशिप। ये सारे एथिक्स के सोर्स है जहां से आप सीखते हैं। peers ग्रुप हमेशा आपके दोस्त, आपके साथी, राइट। डन हो गया? ओके, सो ये सारे रिलीजन, इला, it does very if you talk about Gandhian ethics, Gandhi derived ethics from his own religion that is called He practiced Jainism, and his entire value was based on the Jain philosophy, ahimsa, the non-violence. So religion influenced man very much. It has
सो आज नहीं, कभी और। अगर मैं तो बहुत कुछ पढ़ाना है, बाकी है मुझे, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, राइट। जैसे हमने अभी तक एथेनियन एथिक्स पढ़ा है बेसिकली, और उसके बाद क्या पढ़ते हैं एथिक्स में मैं बता देता हूँ, और कभी एक दिन और डिस्कस कर लेंगे। एथिक्स में आपको मैंने सोक्रेटिस अभी बताया है, फिर प्लेटो सोक्रेटिस सिमिलर है, फिर एरिस्टोटल, फिर मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सब आते हैं। अंबेडकर, गांधी, ये सब थिंकर आते हैं जो आप पढ़ेंगे आगे, राइट। एंड देन लॉ, राइट। एक और आप लिख लीजिए यहां पर, लॉ। Laws are also a source of ethics, like constitution, right? The constitutional morality, we talk about constitutional morality. That means thing right to do according to constitution. ये भी पॉइंट लिख लीजिए। और आज हम यहीं पे समाप्ति करते हैं। आतिफ, I'll stop here today. आज तो कथा वाचन था आतिफ, नहीं? जी सर। आज तो लाइक कथा वाचन। सर आज तो मजा ही आ गया क्लास में। मजा आ गया, चलिए सर बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला, चलिए थैंक यू। कॉमन लाइफ से अपना। यस, थैंक यू। विल resume it sometime, but on Monday we will start Machiavelli. Sometimes we will resume it, पक्का, right? Okay, so see you. हाँ बोलिए। सर बोला था सर आपसे बात करने का, तो मंडे को बात कर लेंगे। मंडे को, हाँ, you can email me anytime, anything if you have very urgent, but मंडे को सर फेस टू फेस सर। हाँ मंडे को, तेत करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Then Monday, okay आतिफ, पक्का? Okay, then see you on Monday. Take care of yourself. Have a good Sunday. Celebrate it. Watch few movies. Very good. To
ये कह रहा हूँ ना, हाँ मुझे पानी देना और चाय है ना, चाय कुछ कह रहा हूँ, तो भी बुला रहा हूँ।